गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर साइंस क्लास। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है सब अच्छे से यूटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इजंट इट? वेरी गुड, यू ऑल आर माई स्मार्ट एंड very very blessed children, isn't it? Okay children, so quickly we shall just do a recap of whatever we had done in the last class, followed by a new topic today, which is shutting down the windows. जैसे आप लोग अपनी नोटबुक वर्क करने के बाद क्लोज कर देते हो, it is your duty to shut down the computer also, otherwise the machine will get cranky, वो थक जाएगी, तो आपको उसको भी तो शट डाउन करना है ना. यू डोंट विश दैट आपका कंप्यूटर जल्दी से ख़राब हो जाए. सो अ प्रॉपर शट डाउन इज नीडेड. सो वी शैल कवर इट टुडे, द टॉपिक ऑफ शटिंग डाउन द कंप्यूटर. ठीक है, लेट अस स्टडी फर्दर. Okay children, so let's start with a recap of whatever we have done in this chapter so far. I had already told you about how to put on the computer. I had told you all the steps, and going forward I had told you that Windows 10 is the most popular program that makes your computer work. Okay, the first screen that appears on starting the computer is called a desktop. Can you all see a desktop here? And this is the first screen that appears when you put on your computer. These small little pictures which you can see are called icons. There is a start button. See, I have put an arrow also there. That is the start button. And the task bar is also present on the desktop. Can you see a task bar at the bottom of your screen? So going forward children, see, whenever you peep outside the window, you can see many things around. It's not that you can just see one thing, no. You can see many things around. And this is how, when the desktop opens, you can still see many things present on the desktop. In the same way, you can open and view many programs in Windows. So there are Paint, movies, music. In the same way, you can open and view many programs in Windows. Okay children. Next comes how to start a program. How to start a program. I had told you that WordPad is a program available in Windows 10. Let us see how we have to open WordPad. Can you see down there the start button which I have circled? You press the start button, go to Windows Accessories, click it once and it shall give you a menu, and in the menu you have to press WordPad. As you open, Word appear, and this is the WordPad window. Can you all see? I have marked it here that you can type your text here. The next topic which we had covered was resizing a window. बेटा हम विंडो किसको कहते हैं? विंडो एक फाइल जो आपकी खुली हुई है, and now you wish to work on another file. So you don't want to close the file, but you just want to hide that file or minimize that file. This is when resizing of a window comes in place. Can you see the circled buttons here on the extreme right side of the screen? These buttons are called the control buttons. Now let us see what these control buttons do for us. The minus button, children, is to make the window small in size. You want to open another window? आपको दोनों विंडोज देखनी है अपने कंप्यूटर पे, तो एक को थोड़ा सा छोटा कर देंगे जिससे कि आप दोनों देख सको.
द मिडल बटन, जो बॉक्स वाला बटन है बच्चा, दैट इज टू रीस्टोर डाउन द विंडो. आपको वापस से अपनी ये पूरी की पूरी विंडो बड़ी करनी है, आपको ये बॉक्स वाला बटन प्रेस करना होगा. एंड द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड बटन विच इज द क्रॉस बटन is nothing but to close the window. So, how was your recap? I hope you all remembered whatever we had learnt. है ना? और ये recap से थोड़ा और ज़्यादा याद हो जाएगा. Class, it is my request that whenever we are done with our class, you should actually go through the book pages. That is really helpful, and then practice it on your computer. अच्छा बच्चा, एक मेरा रिक्वेस्ट था. नाउ दैट वी नो सो मच अबाउट वर्ड पैड, ओपनिंग एंड हाउ टू टाइप, वेयर टू टाइप, why can't you actually type in a few lines and send to Dipali ma'am just with your name and class and just say that I love computers? We should be doing practice on WordPad, so please do that. Now let us go and study our next topic for the day, which is shutting down of a computer. बिल्कुल आराम से और ध्यान से सुनेंगे और हमेशा अपने कंप्यूटर को अच्छे से शट डाउन करेंगे. ठीक है बेटा, चलो आओ पढ़ते हैं. We are going to learn about how to shut down a computer. After you finished your work, we need to shut down the computer. So, what do you mean by shut down? Children, closing of computer and all the applications is known as shut down. आपने जो भी एप्लीकेशन खोला है, it is your duty to close it. WordPad पे काम कर रहे थे, close it. And then you have to shut down the computer. And these are the steps that we need to follow. Let us see. First of all, can you all see the start button here? Good. Just press it. And then you have to look for the power button. P-O-W-E-R, power button. As you do a single click on the power button, it will give you a menu. So after clicking on the power button, we will get the following options. आपको options दिख रहे हैं? Sleep, shut down, restart. So what do we have to do? We have to shut down the computer. So we need to click on shut down and it will automatically shut down your computer. Then you need to switch off the monitor and then you need to switch off the UPS and then the main power supply button. Yes, and this is how your computer will get shut down. Okay? ओह, बहुत सारा पढ़ लिया आज हमने. मेरे छोटे छोटे बेबीज़ को इतना कुछ याद रहेगा? पर क्या करना है? बुक को फिर से रीड लगाना है और जितनी बार आपको देखना है मैम का वीडियो देखो. कोई प्रॉब्लम हो तो मैम को पूछो, है ना. तो बेटा ये ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर चैप्टर आज हमने फिनिश कर दिया. वी हैव फिनिश्ड लेसन नंबर 4, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर. एंड इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हाउ टू स्विच ऑन योर कंप्यूटर स्टेप वाइज. पावर बटन, CPU, UPS, मॉनिटर. उसके बाद क्या पढ़ा? अबाउट द डेस्कटॉप. जो पहली स्क्रीन खुलती है डेस्कटॉप होती है. डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स होते हैं. स्टार्ट बटन इज़ देयर, द टास्क बार इज़ देयर. फिर हमने स्टार्ट बटन से एक्सेसरीज पे जाके हमने वर्ड पैड ओपन करना सीखा. वर्ड पैड में थोड़ी सी टाइपिंग करी. उसके बाद हमने सीखा हाउ कैन वी रीसाइज अ विंडो. वो भी आ गया, छोटा, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल या फिर क्लोज, वो भी पढ़ लिया. फिर हमने शट डाउन कैसे किया कंप्यूटर, देयर ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास. Isn't it? So it was a very interesting chapter and this is how children you are going to learn so much about computers step wise. अब जल्दी से WordPad खोलेंगे और टाइपिंग करेंगे एंड बैक एक्सरसाइजेज सब एक बार रीड करके देखेंगे कि आपको आती है कि नहीं. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शैल बी शेयरिंग द बैक एक्सरसाइजेज. ठीक है, तब तक के लिए और बाय बाय.